let me quickly cut across to this threat coming from terror groups in Kashmir. A terror group, Kashmir Fight, threatens to intensify attacks on non-locals in view of Jammu and Kashmir CEO's decision of giving voting rights to people from other states. A big terror threat after Jammu and Kashmir voting list Rejig. Kashmir terror group threatens targeted attacks. They threaten to continue these targeted attacks against Hindus in Kashmir if at all voting rights are given to non-locals. In fact, here we're looking at the CEO of Kashmir who's almost announced that non-locals who live there ordinarily in Jammu and Kashmir can also seek voting rights. And this has led to a terror group threatening now that they will continue their targeted killings if at all voting rights is given to non-locals in Kashmir. We're looking at first the NC and then the PDP who were infuriated with this decision. Now terrorists jumping in to threaten that they will continue targeted killings if at all voting rights are given. Mehbooba Mufti in fact spoke about this a little earlier. Let me quickly cut across though to India Today, Sunil Ji Bhatt for more on that. Sunil, a quick word on who this terrorist group is and how have they conveyed this message claiming that they're going to continue targeted killings if voting rights are given to non-locals in Kashmir? Well, Nabila, we have seen in the recent past that number of targeted killings have taken place in the Kashmir Valley. Kashmiri Pandits have been targeted. Non-local Hindus who are from other states have been targeted. Dogra Hindus have been, assassinated by the terrorists. So now this decision has come from Jammu and Kashmir Chief Electoral Officer, Mr. Hirdesh Kumar. He has announced that people from other states who are living in Jammu and Kashmir, whether they are students, government employees or laborers, even they can register themselves as voters. So it has created a massive political controversy here in Jammu and Kashmir with National Conference and PDP alleging that BJP is trying to import voters in order to grab power here in Jammu and Kashmir. Nabila, now terror groups are also issuing threats. They have threatened to intensify attacks on Hindus, on the people from other states who are living in the Kashmir Valley. So it is going to create some sort of controversy. Terror groups are also issuing threats. The security agencies have already, sounded high alert, and there is, strict security has already been tightened across the length and breadth of Jammu and Kashmir in view of the threats that are coming in from terror groups. The security situation has been controlled to a large extent. Law and order situation has improved in Jammu and Kashmir post the abrogation of Article 370 and 35A. But the terrorists are, frustrated and rattled. Pakistan is rattled. That is why they are carrying out these targeted killings through hybrid terrorists. Nabila, I will just quickly get a reaction from the working president of Jammu and Kashmir Congress, Raman Bhalla. I will just talk to him. Bhalla Sahab, अभी जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हृदेश कुमार, जो उन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ पर जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर जो रहते हैं उनको भी मतदान का अधिकार दिया जाएगा, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखो, ऑलरेडी हमने जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम ने और अपनी पार्टी की तरफ से हमने हमेशा अपोज किया कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, जहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को डिमोरलाइज करना और उनको न्यूट्रलाइज करने की बात यहाँ पे है। पहले भी लोग यहाँ पे होते थे। इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल पोस्टर पे, जहाँ पे तो लीगल इनका हक बनता होगा तो वो बड़ा डिबेटेबल इशू यहाँ पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो अस्तवाई रियासत है उसको ये टेस्टिंग लेबोरेटरी भाजपा ना समझे, और हमारा स्टैंड क्लियर हो गया कि भाजपा जम्मू कश्मीर में कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। यही एक वजह थी कि बैकडोर के जरिए अपने वोटर्स को इंपोर्ट करना चाहती है, और जम्मू कश्मीर के सब लोगों ने इस पे नजर यहाँ पे रखी है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रमन भल्ला जी, एक सवाल रमन भल्ला जी, देखिए अगर जम्मू कश्मीर का कोई निवासी है, वो अगर दूसरे राज्य में कुछ काम करने जाता है या पढ़ाई के लिए जाता है, वहां पर उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, वोटर लिस्ट पे उसका नाम आ जाता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं ऐसा हो? यहाँ पे पोस्टल बैलेट तो यहाँ पे है। हम तो इसलिए यहाँ पे करके जो लोकल थे, चाहे वो डोगरा थे चाहे कश्मीरी, आप ये महसूस करें कि कश्मीरी पंडितों को भी अगर वोट डालना तो कितने उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले उसका हाउस तो इन ऑर्डर में यहाँ पे करे,
हम चाहते हैं कि जो लीगली यहाँ पे हो वो डिबेटेबल इशू। अब्दुल्ला जी, मुद्दा ये है कि देखिए जैसे पंजाब में कई राज्यों के लोग रहते हैं, यूपी से, बिहार से, जम्मू कश्मीर के लोग भी रहते हैं, उनको वोट देने का वहां अधिकार है, वोटर लिस्ट में उनका नाम जा रहा है। अगर यहाँ पर भी दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनको अगर वोट का अधिकार मिलता है, उसमें आपको आपत्ति क्या है? पार्लियामेंट के चुनाव में तो यहाँ पे भी डालते हैं, आप 25 लाख वोट डाल देंगे, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहीं कश्मीर पढ़ना, यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, उनकी नुमाइंदगी कहाँ पे रहेगी? उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए राइट टू जो फ्रेंचाइज वोट डालने का जो हक था उसको न्यूट्रलाइज करने की साजिश है। लगता है कि बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता में आने के लिए ऐसा कर रही है? बीजेपी सत्ता में आने के लिए कभी डिलिमिटेशन कमीशन अपने तौर पे बनाना, जम्मू कश्मीर में इस ढंग से अपने आप में यहाँ पे चलाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग के माध्यम से 22 से ज्यादा लोगों की जाने टारगेटिंग किलिंग के माध्यम से होगी। कश्मीरी और जम्मू के लोग, आतंकी संगठनों ने भी धमकी दी है कि जो कश्मीर घाटी में जो दूसरे राज्यों के लोग रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और उनकी हत्याएं की जाएंगी। वो तो यहाँ की सरकार का, अमित शाह को यहाँ पे देखना कि इन टेररिस्टों को किस ढंग से निपटना। हम तो सरकार निंदा करते हैं, सरकारों के साथ है टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने दो प्रधानमंत्री जान देश की खातिर जान निछावर कर दी, आज भी हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल जो लीडरशिप है उसको खत्म करने का प्रयास है भाजपा की तरफ से, और ये इंपोर्ट करने की बात है, काम कुछ हुआ नहीं। आप टारगेटिंग किलिंग देखिए, सिविलियन किलिंग देखिए, कश्मीरी पंडित सड़कों पे हैं, जो एम्प्लॉय जो जम्मू के बेस कश्मीर में थे वो सारे आ गए, सब लोग परेशान यहाँ पे हैं। So Nabila, clearly you can see that the Congress party has now also opposed the decision which has been taken by the Jammu and Kashmir's chief electoral officer. Congress party is now saying that this is a wrong decision and the BJP is trying to import voters to grab power in Jammu and Kashmir. Nabila, back to you. Sunil, thank you very much for joining us on that.